अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा वीक 10 लेक्चर है। एज यू नो, प्रीवियस वन वाज अबाउट वीक 9। इस वीडियो का बेसिक पर्पस क्या है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली दिस वन इज अबाउट लिंक विद द कम्युनिकेशन कंटेंट्स। कुछ बीच में हमने जो कंटेंट्स कवर किए वो टेक्निकल फॉर्म में थे, लाइक आपकी रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको टास्क दिया। डीएफटी ईआरडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपके टॉपिक थे और कुछ आपके ईआईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। फिर हम रिपोर्ट राइटिंग की तरफ आए। अगेन वी हैव टू मूव बैकवर्ड, व्हाई एंड व्हाट्स द बेसिक रीजन, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बेसिकली लास्ट आपकी जो असाइनमेंट थी और लास्ट जो लेक्चर था, दैट वाज अबाउट प्रपोजल रिपोर्ट। नाउ टिल प्रपोजल इट्स फाइन, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ईआईडी में प्रॉब्लम्स हैं, डीएफडी में दे आर नॉट क्लियर इवन दो अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स टिल नाउ, एंड पीपल आर वेरी मच वरीड अबाउट कि प्रोजेक्ट कैसे किया जाए एंड ऑल दैट, बिकॉज डेफिनेटली आप स्टूडेंट्स का राइट भी है, और स्टूडेंट्स इस टाइम ये फील भी कर रहे हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू कैन से विदाउट एनी प्रॉपर सुपरविजन। तो डेफिनेटली आप अपने सुपरवाइजर से पहले तो अगेन एंड अगेन डिस्कस करें, जहाँ तक हो सकता है उनको कांटेक्ट करें और मेक clear your queries कि आपकी जो भी queries हैं, problems हैं, and accordingly then you have to make the documentations and all that. So that is the reason I just want to take the break, and I just want to give the gap कि आप थोड़ा सा बीच में गैप लें और हम कम्युनिकेशन के कुछ कंटेंट्स को पहले कवर अप कर लें, एंड देन वी हैव टू गो ऑनवर्ड, दैट मीन्स वी हैव टू गो ऑनवर्ड टूवर्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट। हम प्रोपोजल रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें देख चुके हैं। So for this lecture, what we have to cover, students, we have to cover about, and this one is specifically about listening skills, जो basic topic है, and in which we have to cover about barriers of communication. Now, generally आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे what are the basic barriers of communication. आजकल तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और किस तरह आप बहुत सारी हर्डल्स और इश्यूज और फेस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द बैरियर फॉर गुड कम्युनिकेशन। नेट का इशू है, वॉइस का इशू है, लाइक प्रॉपरली हम वी कैन से hearing problem in a way, that means we are not able to hear properly जब हम through net कुछ convey करते हैं। So ये सारे आपके barriers हैं। Anyhow, so what are the learning objective of this we can say lecture? Basically, ये lecture specifically what's the concept of barriers? That means barriers of communication, and then it links with the types of kinds of barriers. That is the basic thing we want to find out in this lecture. Now we have to go onward, students. Now, what's the concept of barrier? You know very well, like whenever we feel anything, like we can say any hurdle, any problem, any issue regarding our conversation, that can be the barrier. कोई भी hurdle होती है, कोई भी problem होता है, that can be a noise, that can be a your environment, that can be the weather condition ऐसी होती है जिसमें you are not able to speak properly, like आपका आगे summer condition आ रही है, summer season है, winter के point of view से if you are not able to आप properly communicate नहीं करते हो, there are number of things that affect your communication. So ये सारी चीज़ें आपकी effective communication को in a negative way affect करती हैं. That can be the barrier, we can say, and these are the barriers. Now means, now what is, we can say generally what's the meaning of barrier? Noise, or we may refer to as a barrier, or any hurdle, any problem, any issue for a proper communication, because of which we are not able to communicate properly, that can be the hurdle.
Now, during the process of communication, there may be some fault. That means there is some faulty, you can say, transmission or transaction that uh, because of that, which may prevent message from reaching, or some of these defects are in medium. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में इन डिटेल डिस्कस करेंगे एंड दैट प्रॉब्लम कैन बी इन योर मीडियम दैट प्रॉब्लम कैन बी इन योर tool and which we use for communication. Now medium and tool, again it's very important thing. जब हम मीडियम और टूल की बात करते हैं तो वेरी इजीली वी कैन से जस्ट लाइक जैसे आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए कोई टूल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके थ्रू आप जब प्रॉपरली उसको कन्वे नहीं कर पाते हैं या टेक्नोलॉजी के थ्रू आप प्रॉपरली आप अपने सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को एक प्रॉपर यू कैन से सेटअप के अकॉर्डिंग उसको डेवलप नहीं कर सकते, उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो अगेन दैट कैन बी द बैरियर फॉर गुड कम्युनिकेशन और दैट कैन बी द बैरियर फॉर गुड output or productive output. So that is the reason medium and tools again very important thing for again, and that can be the barrier for good communication also if it is not properly working. Now another very important thing, your language, we can say linguistic barriers जिसको हम कहते हैं, nature of the person, that means we can say that can be the personality of the individual, again very important. अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंडिविजुअल है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, यू कैन से एंगर के साथ यू आर यूज टू ऑफ डीलिंग विद द इंडिविजुअल, अगेन इट्स द बिगेस्ट issue regarding effective communication. Now, barriers to communication can be of many kinds. The number of types of barrier, the number of kinds of barrier, and but very few we have to discuss right now from our lecture content point of view. Before moving onward, first of all, we have to know there are three basic types of, we can say, generally, um, whatever we are studying, that means barriers. Now, there are three types of barriers. First one is about, we can say, sender level barriers. That can be about this one, or we can say this portion that is linked with sender level barriers. And another very important thing are sender oriented barriers जिसको हम कहते हैं. Another one is about, we can say that is about receiver oriented barriers. Now receiver oriented barriers इसको भी हम discuss करते हैं अभी. And another very important thing is medium oriented barriers. That is the third one. Now, very important thing, तीन टाइप्स होती है हमारी बैरियर्स की, वेरी इंपॉर्टेंट. दैट कैन बी द सेंडर ओरिएंटेड, मीडियम ओरिएंटेड एंड रिसीवर ओरिएंटेड. These are the basic components of we can say communication process. Basic जो components होते हैं from your computer sciences point of view, you know very well. First thing is about input, are the data source through which we can take the data, and transmitter are the sender who has to send the data, and the medium through which you have to send the data, and the destination where you have to receive the data. And then the receiver is the person who has to receive the data. So this is very important. These are the five basic components of communication process that we have already discussed in our week 4 lecture, right? Right now, why we are discussing basic purposes, we want to find out there are three types of barriers, like that can be sender oriented barrier, receiver oriented barrier, and medium oriented barrier. इफ वी फील किसी भी लेवल पे या किसी भी साइड पे आपका प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट योर मैसेज इन अ प्रॉपर वे. So sender oriented level and message is very important, and you can say communication is very important, through which we are communicating, whatever the source, whatever the medium, whatever the cable, whatever the telephone, whatever the, you can say through air, we are passing our, you can say message, whatever the source, that is very important, through which we can convey our message. Now this one is about receiver oriented
Now, again, when we are talking about receiver oriented, this is very important, in which we can say your receiver, uh, what's the mood of the individual, how is he's perceiving the data, how he's getting that information and all that. That is very important. And what will be the source and destination. So these are three basic levels: sender oriented, receiver oriented, and medium oriented, on the basis of which we can say if all these levels are properly clear, are properly, you can say you are using in a proper way, we can say then you are able to communicate your message in a proper way. So this one is about the basic concept. And there are basic three types of like sender, receiver, and medium oriented, we can say, barriers. Now next one is, now journal, ये तो हमने sender oriented, we can say receiver oriented, or another one is about मीडियम ओरिएंटेड, राइट। ये थ्री हमने टाइप्स डिस्कस की, जो बेसिक टाइप्स हैं, दैट वी नो वेरी वेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, कंप्यूटर साइंसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वी नो वेरी वेल कि ये थ्री हमारे बेसिक वी कैन से साइड्स हैं, या ये थ्री टाइप्स आर लेवल्स ऑफ बैरियर्स होंगे। So अब उसके अंदर generally we have to divide into generic or general form of barriers. ये general form of barriers हैं जो अभी हम discuss करेंगे students, जिसमें first one is right now we have to discuss like very important and most of the time very common thing, and we know very well that is about physical environmental barriers. Now when we are talking about physical or environmental barriers, तो डेफिनेटली यू नो वेरी वेल फिजिकल फॉर्म में कोई भी आपकी हर्डल, कोई भी प्रॉब्लम आता है, इन्वायरमेंटल बैरियर्स आते हैं लाइक वेदर कंडीशन, रेनिंग, and all that. These are the different things, and that can be because of what's are the basic causes for the, we can say, physical barriers, like time, again very important thing, place wherever you are communicating and where you have to communicate, what will be the place, what will be the, you can say, location of that whatever area, space, again very important thing, and climate, अभी हमने डिस्कस किया, noise, choice of medium. So these are very important, we can say, causes because of which अगर ये properly use हो रहे हो तो definitely you can communicate in a proper way. If it is not in a proper way, so definitely it becomes a biggest barrier regarding your communication. Barriers caused by wrong choice of medium, जैसे हमने अभी discuss किया, medium is again very important. You can say level are very important thing when we are talking about barriers of communication. अगर आप कोई भी मीडियम आप या whatever we want to write down आप बोर्ड पे लिखते हैं और प्रॉपरली हम कन्वे नहीं कर पाते, अगर हम यू कैन से स्लाइड्स के थ्रू आप प्रेजेंटेशन देते हैं और उसमें यू आर नॉट एबल टू, तो आपकी प्रॉपरली कन्वे नहीं कर सकते, वट एवर द टूल आर द टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, उसमें इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्वे योर मैसेज इन अ प्रॉपर वे, जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और उसमें यू हैव टू प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग, आप अभी काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे, और एट द एंड ऑफ द डे वट एवर द टूल टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, जिसको हम मैकेनिकल डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वो भी हम फिजिकल के साथ लेते होते हैं, उसको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली यूज़ नहीं करते और एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं आती, तो इट्स ऑल अबाउट यूजलेस एफर्ट. So that is the reason it's very important. Then another very important thing is about semantic barriers. Now, what are the semantic barriers? Semantic barriers, that means different words have different meaning. So it's about varied connotatives, that means it's about hidden, you can say hidden meaning of the words as per the area, as per the culture and so on. Different meanings हम लेते हैं as per the norms, tradition and culture and all that. कुछ words होते हैं जिनको हम different ways में उनको perceive करते हैं, तो that can be about semantic barriers also. Cultural barriers, and that can be at sender end, and semantic barriers, and that can be at receiver end also.
So cultural barriers, when we are talking about cultural barriers, it's a very important thing and we know very well. Like we have very diversity in our culture when we are talking about Pakistan. So पाकिस्तान के अंदर we have different provinces. हर province के अंदर हमारे अपनी culture, norms, values हैं और उसको हम फॉलो करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू परसीव ईच एंड एवरीथिंग. सो हमारी जो परसेप्शन होती है पर्सन टू पर्सन, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, कल्चर टू कल्चर वेरी करती है. सो डेफिनेटली if we are not properly we can say we are not getting the point in a proper way, so that can be the cultural barrier. इसको हम in detail with different examples further आगे discuss करेंगे. And psychological or attitudinal barriers, again psychological barriers are very important and we can say इनको हम psychological जो psychological barriers होते हैं उसमें there are number of we can say factors जो affect करते हैं, like our mood, again very important, attitude, the way we have to behave with the individuals, and what will be the attitude of the individual toward his work, toward the organization, and so on. Again, it's very important factor. And if you are not in a proper, you can say you are not behaving in a proper way, so that can be the negative thing, that can be the barrier for a good communication. And relationships, again very important thing. अगर आपके relationships, because of your attitude, because of your personality, because of your mood, अच्छे नहीं है लोगों के साथ, तो that can be a barrier for good communication also. Now, next, another very important barrier is about barrier caused by varying perception of reality. Again, this is very important. Class, perception of the individuals definitely अभी मैंने आपको बताया from person to person vary करता है, from place to place vary करता है. So जैसा भी आपका brought up होता है, जैसा भी आपका एरिया है होता है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू परसीव द you can say message. So your barriers caused by varying the perception of the reality. That means your perception can be varied and as comparative to the reality, and because of your you can say perceiving you can say capacity or whatever you are perceiving regarding anything, because of your nature, because of your personality, because of your IQ level, because of your caliber, because of your understanding level. सो यही सारी चीज़ें मैंने अभी आपसे डिस्कस की, लाइक लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज ऑफ दैट perception will be changed. So these are the, we can say, barriers of communication. Right. Now, next one is about that we have to, these are the general barriers of communication. Next one we have to discuss is about, वी कैन से उन्हीं बैरियर्स को थोड़ा सा टेक्निकल वे में डिटेल में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, बट जनरली वी हैव टू गो थ्रू फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एंड देन वी हैव टू गो you can say we have to discuss all of these one by one. So thank you class and thank you students for this clip. Next ये वाली slide हम next clip के अंदर discuss करेंगे. Thank you so much students.